So we'll be solving question 1, question 2, and question 5 today. Root hair cells are specialized plant cells located in the outer layer of young roots of plants. Outer layer is basically your epidermis. Root hair cells have an essential role in the uptake of water and dissolved mineral ions from the soil solution. The transport of water across the root to reach the central xylem tissue can occur by the symplast pathway or epoplast pathway. Figure 1.1 is a diagram of a photomicrograph of a root hair cell. On figure 1.1, name cell structures X, Y, and Z. So X is basically your large permanent vacuole. Large permanent vacuole. Y is basically the membrane of the vacuole, which is known as the tomoplast. Z is basically the nucleus because it's like a spherical structure, a round structure. अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया होता तो सॉसेज शेप्ड होता, अगर ये क्लोरोप्लास्ट होता तो हमें थाइलाकोइड नजर आ रहे होते. But because it's neither of the two, so this is basically your nucleus. In the simplest pathway, water passes through the cells of the different tissues in the root before entering the xylem vessels of xylem tissue. Name the tissues of the root in the correct sequence through which water passes in the simplest pathway. So from the root hair cells, which cells which make up the tissues of the root does the water pass before it enters the xylem? So हमारे पास root hair cell से जाता है. Root hair cell is basically your epidermal cell. So root hair cell से the water moves towards the cortex cells, जिनको हम cortical cells भी बुला सकते हैं. ओके, अच्छा नहीं, तो वो हमसे टिश्यूज की बात करें तो हम सेल्स की बात नहीं करेंगे, हम खाली कोर्टेक्स टिश्यू की बात करेंगे. Cortex tissue. From the cortex, it moves towards the endodermis. So हम endodermis या endodermal tissue लिखेंगे. एंड एंडोडर्मल टिश्यू के बाद क्या कहते हैं, हमारे पास पेरीसाइकिल पर भी वो मूव करते हैं. पेरीसाइकिल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इफ यू वांट टू राइट अबाउट पेरीसाइकिल यू कैन राइट, but your examiner is essentially expecting you to write at least about these three. So if you write these three, you will get your marks. अच्छा, ओवर हियर यही चीज अप्लाई होगी. वो हमसे टिश्यूज की बात कर रहे हैं, सेल्स की बात नहीं कर रहे. तो हमारे पास रूट हेयर सेल्स वी नो आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस. सो हम एपिडर्मिस या फिर एपिडर्मल टिश्यू लिखेंगे. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. इन द एपोप्लास्ट pathway, which is the cell wall to cell wall pathway, water passes along the cell walls of adjacent plant cells and through the intercellular spaces. This is more efficient than the symplast pathway. Explain the structural features of plant cell walls that make the apoplast pathway an efficient pathway for the transport of water. So basically, the plant cell walls are made up of cellulose fibers and they're arranged in a way in a crisscross pattern. So let's say this is one cellulose fiber, and this is another cellulose fiber, and this is another cellulose fiber. So between these fibers, we have empty spaces or tiny gaps. So हमारे पास जो ये empty spaces or tiny gaps होते हैं, these basically make the cell wall permeable, fully permeable. Anything which can cross these gaps can move past the cell wall. So the fact that there are these gaps and water can freely move through these gaps make it possible for the water to move via the apoplast pathway. So we'll write cell wall is made up of cellulose fibers arranged in a crisscross manner, due to which there are
small spaces within the cell wall, making it permeable to water. Water can easily move through the space these spaces एंड ऑल्सो हमारे पास जब वाटर मूव करता है तो वो जिन चीजों के साथ इंटरैक्ट करता हुआ जा रहा होता है वो उन चीजों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है जिसको हम एडहीजन बुलाते हैं सो व्हेन द वाटर इज मूविंग थ्रू दीज स्पेसेस इट इज फॉर्मिंग एडहेसिव बॉन्ड्स विद द cellulose fibers. Water can easily move through these spaces and forms adhesive hydrogen bonds with cellulose fibers. Root hair cells also synthesize and secrete substances into the soil. Electron microscopy of the structure of root hairs have identified endoplasmic reticulum, a number of small Golgi bodies, and numerous vesicles. Root hair cells of the barley plant secrete enzymes known as acid phosphatases, which catalyze the release of inorganic phosphate ions from organic phosphates in the soil. Root hair cells of the sorghum plant secrete a hydrophobic lipid compound known as cerugilune, which slows down the growth of neighboring plants. Explain why the proportion of rough ER to smooth ER may be different in the root hair cells of barley plants compared with the root hair cells of sorghum plants. Now, the root hair cells of the barley plants are secreting enzymes. Enzymes are proteins. So there would be more protein synthesis happening in the barley plants, which means that there would be a greater proportion of RER compared to SER in the barley plants. On the other hand, when we're talking about the sorghum plant, it is basically secreting a lipid compound, which means that lipid synthesis is taking place. And if lipid synthesis is taking place, that means that there would be more SER present compared to RER because SER is involved in lipid synthesis. So, barley plant would have a higher proportion of rough endoplasmic reticulum since it is involved in protein or you can say enzyme synthesis. Sorghum plant would have a higher proportion of SER since it is involved in lipid synthesis. Student X stated that acid phosphatases and cerugilune could be transported out of root hair cells using the same process. Student Y stated that acid phosphatases and cerugilune are transported out of root hair cells using different processes. Suggest the reasons given by student X and by student Y to support their statement. So this is a very interesting question. हमारे पास acid phosphatases क्या है? Acid phosphatases is an enzyme
which means it is protein in nature, and cerulean is basically a lipid in nature. Agar same process है, what do you think? What could be a same process through which an enzyme or a lipid is moved out? हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो proportion है, लेकिन do you guys see this point? What does numerous vesicles suggest? अगर किसी भी सेल में न्यूमरस वेसिकल्स होती हैं, सो हमारे पास क्या कहते हैं, व्हाट डज दैट मीन, कि हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा जिसमें हम वया फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल चीजें बाहर ट्रांसपोर्ट करता, कैन वी से कि हमारे पास अब बल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, एक्सोसाइटोसिस हो रहा होगा, because हमारे पास bulk transport में we don't see what is the nature of the substance which is being transported outside of the cell. अगर वो large quantity में उसका ज्यादा बड़ा size है, so हमारे पास क्या कहते हैं, via exocytosis it would move. So अगर same process की बात हो रही होगी तो हमारे पास enzyme and lipid both, if they're large in quantity or they're large in size, they would cause the cell membrane to fold, and they would actually cause the they'll push the cell membrane, they'll fuse with the cell membrane, become the part of the cell membrane and release their content outside of the cell. So हमारे पास vesicles में enzymes या lipids enclosed होंगे, those vesicles would fuse with the cell surface membrane, causing the release of the enzymes and lipid within the vesicles. So student X would have suggested that both are transported via exocytosis because both are large molecules, thus use bulk transport to exit the cell. Now, हमारे पास हमें स्टूडेंट वाई की रीजनिंग देनी है कि स्टूडेंट वाई ने क्यों कहा कि एसिड फॉस्फेटेजेस एंड cerulean would be transported by different processes. Now, अगर एंजाइम है, can an enzyme directly cross the phospholipid bilayer? Can a protein directly cross the phospholipid bilayer? It could not. But can a lipid molecule directly cross the phospholipid bilayer? Yes, a lipid molecule can directly cross the phospholipid bilayer, which means that the two different processes through which acid phosphatases and cerulean could move is that the acid phosphatases is moving via facilitated diffusion because it is hydrophilic in nature, so it would require a transport protein for its movement across the phospholipid barrier. Whereas the cerulean lipid is moving via simple diffusion as it is hydrophobic in nature and can cross the phospholipid barrier. Does that make sense? Cerulean moves via simple diffusion as it is hydrophobic in nature, whereas acid phosphatases move via facilitated diffusion as it is hydrophilic in nature. Okay, next question. The transport of respiratory gases involves blood plasma and red blood cell. Red blood cells contain globular protein, hemoglobin,
Describe features of a hemoglobin molecule that are typical of a globular protein other than having an approximately spherical shape. So basically, a globular protein is a protein which has the amino acids with hydrophilic R groups pointing towards the outside aqueous environment, whereas the amino acid with the hydrophobic R groups are pointing inwards away from the aqueous external environment. So a globular protein has the amino acids with hydrophilic R groups pointing towards the outside aqueous environment, whereas the amino acids with hydrophobic R groups are pointing towards the center of the molecule away from the aqueous or external environment. A number of substances are involved in the transport of respiratory gases. Complete table 2.1 by stating the name of the substances that matches the description of its role in the transport of respiratory gases. The first row has been completed for you. So the substance is carbon dioxide, which role in the transport of respiratory gases is that in the capillaries of respiring tissues, this combines with water to form carbonic acid. Okay, let's fill the remaining 5 boxes. In the capillaries of respiring tissues, this enters red blood cells through a membrane transport protein. So, in the capillaries of respiring tissues, this enters red blood cells through a membrane transport protein. What do you think enters in the red blood cell through a membrane transport protein? लेट्स रिकॉल हमने क्या पढ़ा हुआ है रेड ब्लड सेल्स के बारे में. रेड ब्लड सेल्स में क्या क्या आता है? रेड ब्लड सेल्स में ये हमारे पास क्या कहते हैं? कैपिलरी. इसमें हमारे पास क्या कहते हैं? रिस्पायरिंग टिश्यूज हैं ये. We have carbon dioxide entering. It combines with water to form carbonic acid. Okay, let me make it a little bigger. Yeah, draw कर देता है. This is a red blood cell. Carbon dioxide enters, combines with water to form carbonic acid, which dissociates into hydrogen ion, which eventually forms hemoglobinic acid, causing the exit of oxygen to respiring tissues. And the carbonic acid dissociates into the bicarbonate ion, which exits and a chloride ion enters. Now, a chloride ion is a charged molecule. A charged molecule would obviously need a membrane transport protein to enter because anything which is charged or polar in nature cannot directly cross the phospholipid bilayer membrane. So the substance would be chloride ion. Very good, Alicia. In red blood cells, this is formed when carbon dioxide binds to hemoglobin. If carbon dioxide is binding to hemoglobin, it is known as carb amino hemoglobin because the carbon dioxide binds to the amine group of the amino acids present in the hemoglobin. We don't call carboxyhemoglobin because carboxyhemoglobin is the substance which forms when carbon monoxide combines with the heme group of hemoglobin.
कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। सो दिस वुड बी कार्ब अमीनो hemoglobin. In alveolar capillaries, so it's alveolar capillaries, this combines with a hydrogen ion in red blood cells to form a carbonic acid. अच्छा, हमारे पास क्या कहते हैं, जो हम रिस्पायरिंग टिश्यूज में देखते हैं उसका ऑपोजिट होता है हमारे पास एल्व्यूलाई में। सो एल्व्यूलाई में क्या होता है, द bicarbonate ion which was in the plasma enters, chloride moves outside, the bicarbonate ion combines with hydrogen to form carbonic acid. This carbonic acid is then converted by carbonic anhydrase into water and carbon dioxide, and the carbon dioxide eventually leaves out into the lungs, और lungs से हमारे पास ऑक्सीजन आ रहा होता है to form hemoglobin. So this would be bicarbonate or hydrogen carbonate ion. Alveolar capillaries, this is formed in red blood cells as a result of oxygen binding to a heme group, oxyhemoglobin. In red blood cells, this combines with hemoglobin to form hemoglobinic acid. So, hydrogen binds with hemoglobin to hydrogen ion binds with hemoglobin to form hemoglobinic acid. Okay, over here you either have to write it as H plus or write hydrogen ion. If you write hydrogen, hydrogen basically means H2, hydrogen gas. So that would be wrong. So you have to write hydrogen ion or write H plus to get the correct answer. Okay, then let's move towards question number 5. Okay, there is a global shortage of blood for transfusions. Researchers can culture bone marrow stem cells in the laboratory to manufacture red blood cells for potential use as an artificial blood product. The researchers collect bone marrow from stem cells that are present in small quantities in blood rather than extracting them from bone marrow. So हम कौन से stem cells use कर रहे हैं जो कि हमारे पास blood में present है, instead of extracting them directly from the bone marrow. Antibodies specific to bone marrow stem cells are attached to tiny magnetic beads. So हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है कि हर सेल के ऊपर हमारे पास क्या कहते हैं, जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स इज बेसिकली द ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, उनको कलेक्टिवली हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बुलाते हैं. The glycocalyx act as what? It acts as the cell recognition marker. Cell recognition marker का दूसरा नाम होता है antigen. So each cell has an antigen. एंटीजन का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास हर एंटीजन जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा. वी हैव स्टडीड कि हमारी बॉडी के जो एंटीजन होते हैं वो हमारे सेल्फ एंटीजन होते हैं और सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स लॉन्च नहीं करती बॉडी. सो हमारी अपनी बॉडी के भी सेल्स के एंटीजन होते हैं. So what happens is, if we have to get the stem cells from the blood, what we do is we have antibodies which have complementary binding sites, complementary antigen binding sites to the antigens present on the bone marrow stem cells, उनको introduce करवाते हैं, and they're attached to tiny magnetic beads. The beads are added to a sample of blood. So हम एक sample of blood draw करते हैं किसी का भी, and हम उसका जब blood sample draw करते हैं, what we do is that an electric field is applied to immobilize the beads so that the bone marrow stem cells can be collected. So what happens is, एक ब्लड का सैंपल है, उस ब्लड के सैंपल में हमने एंटीबॉडीज ऐड की, हमने जैसे ही एंटीबॉडीज ऐड की वो क्या कहते हैं, बाइंड करेंगी आपके कॉम्प्लीमेंट्री बोन मैरो स्टेम सेल्स के साथ. जैसे ही वो बाइंड करेंगी हम क्या अप्लाई करेंगे, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सो दैट हमारे पास क्या कहते हैं, the tiny magnetic beads or the antibodies do not move and they stay where they are so that the bone marrow stem cells can be collected. Are we clear so far? Any questions? Okay. The antibodies are attached to the bead so that the sites used for binding to specific molecules on the bone marrow stem cells are left exposed.
Name the term given to the specific molecules on the bone marrow stem cells that attach to the antibody binding sites. ओके, मैंने क्या टर्म यूज की थी एट द वेरी स्टार्ट? सेल रिकग्निशन मार्कर का दूसरा नाम क्या होता है? एंटीजन होता है। तो हमारे पास जो एंटीबॉडीज बाइंड करती हैं वो एंटीजन से बाइंड करती हैं, ठीक है आयशा? तो ऑल्दो योर कॉन्सेप्ट इज करेक्ट, लेकिन हम एंटीबॉडीज की टर्म में जब बात करते हैं तो जो एंटीबॉडीज का वेरिएबल रीजन होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो टेक्निकली एंटीबॉडीज बाइंड टू एंटीजन्स। रिसेप्टर का वर्ड हम तब यूज करते हैं जब एक सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आकर आपके ग्लाइकोकैलिक्स से बाइंड करता है, तो हम तब कहते हैं दैट द ग्लाइकोकैलिक्स इज एक्टिंग एज अ रिसेप्टर। यहाँ पर वो रिसेप्टर की तरह एक्ट नहीं कर रहा, वो एंटीजन की तरह एक्ट कर रहा है। Okay. Suggest and explain the advantages of using bone marrow stem cells from the blood sample to manufacture artificial red blood cells. Okay. So they're asking us कि हम क्यों stem cells को अगर use कर रहे हैं तो उसका advantage क्या हो सकता है, कि हम stem cells से क्यों red blood cells form कर रहे हैं? तो हमारे पास जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, हमने क्वेश्चन क्या स्टार्ट किया था? There is a global shortage of blood transfusion. Researchers can culture bone marrow stem cells in the laboratory to manufacture red blood cells for potential use as an artificial blood product. अच्छा, हमारे पास आरबीसीज जो होती हैं, कैन आरबीसीज डिवाइड वाया माइटोसिस? कैन आरबीसीज डिवाइड वाया माइटोसिस? आरबीसीज के पास न्यूक्लियस होता है मैच्योर आरबीसीज के पास? मैच्योर आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता। अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो उनका न्यूक्लियर डिवीजन भी नहीं होता। सो तभी हमारे पास आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज यानी कि 3 मंथ्स होता है। 3 मंथ्स होता है, 4 मंथ्स होता है? 120 डेज होता है, दैट तो आई नो। 120 डेज इज 4 मंथ्स आई थिंक। सो हमारे पास 120 डेज इज द लाइफ स्पैन ऑफ एन आरबीसी बिकॉज दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस। तो क्या कहती हैं, एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो अपनी कॉपीज नहीं बनाते। सो वेयर डू द आरबीसीज कम फ्रॉम? दे कम फ्रॉम द डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स। सो हमारे पास जो हम स्टेम सेल्स यूज कर रहे हैं एज अ ब्लड प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू ओवरकम ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब होता है कि जब भी किसी को ब्लड की नीड हो तो हमारे पास ब्लड अवेलेबल हो उसमें ट्रांसफ्यूज करने के लिए। अगर हम स्टेम सेल्स यूज कर रहे हैं ब्लड सैंपल के, तो कंटिन्यूसली वो ब्लड से जो हमने स्टेम सेल्स दिए हैं, दो स्टेम सेल्स कैन बी कल्चर्ड एंड दे कैन कंटिन्यूसली डिवाइड टू फॉर्म आइडेंटिकल cells, and those identical cells can then further specialize into red blood cell. So whenever there is a need of transfusion, हमारे पास blood available होगा blood banks में। Does that make sense? सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेड ब्लड सेल्स अगर हम लेंगे तो रेड ब्लड सेल्स को डिवाइड नहीं करेंगे, 4 महीने बाद वो खत्म हो जाएंगे। अगर हम स्टेम सेल्स लेंगे, स्टेम सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड किए जा रहे हैं। सो दे वुड बी, जितनी देर तक, जितने अरसे तक हम क्या कहते हैं उनको न्यूट्रिशनल कंडीशंस देंगे, उनको कल्चर करेंगे, दे विल कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड नॉट जस्ट सर्वाइव, दे वुड कंटिन्यूसली मेक देयर जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। तो हमारे पास एक कंटिन्यूस सप्लाई मौजूद होगी स्टेम सेल्स की। And then those stem cells can specialize or differentiate into red blood cells. This way, we would have a large amount of red blood cells present in the present for blood transfusion whenever that is needed. ठीक है? अच्छा, अगर हम क्या कहते हैं, इसको कंपेयर करें कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग बोन मैरो स्टेम सेल्स फ्रॉम अ ब्लड सैंपल, अगर हम डायरेक्टली बोन मैरो से लेते हैं, तो वो एक बुरा प्रोसेस या वो एक लेस प्रेफर्ड प्रोसेस क्यों होता? क्योंकि हमारे पास अगर हम बोन मैरो से ले रहे हैं स्टेम सेल्स, तो बोन मैरो के लिए हमें ऑब्वियसली इन्वेसिव तरीका यूज करना पड़ेगा। हमारे पास क्या कहते हैं, बोन मैरो हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। एक ब्लड सैंपल के लिए आपको सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। आपने कितनी दफा ब्लड सैंपल्स क्या कहते हैं लेबोरेटरी में जाके ब्लड कल्चर के लिए करवाया होगा। इट जस्ट टेक्स वन prick to draw a blood sample. Compare that to actually undergoing a whole surgery to extract the bone marrow just so that you can get stem cells. Which is better, drawing a blood sample or doing a bone marrow extraction? Rather prefer giving a blood sample or getting a bone marrow extraction? Blood sample. So हमारे पास taking bone marrow stem cells from the blood sample is less invasive compared to extraction of the bone marrow. So that's why it is a better or advantageous methodology. So stem cells can divide
via mitosis to produce genetically identical daughter cells, which can in turn differentiate into red blood cells. This way, large quantities of RBCs can be produced to overcome problems related to blood transfusion, collection of bone marrow stem cells from blood sample is less invasive than bone marrow extraction. One desirable feature of artificial blood products, such as artificial red blood cells, is that they should be economical to produce. So, just other desirable features of artificial blood products. अच्छा, अगर हम artificial blood products बना रहे हैं, तो उनमें क्या-क्या qualities होनी चाहिए? सबसे पहले हमारे पास एक आर्टिफिशियल ब्लड प्रोडक्ट, ऑब्वियसली इसका पर्पस क्या है बनाने का? इसका पर्पस ये है कि हम पेशेंट्स जिनको नीड है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, उनमें ये ब्लड प्रोडक्ट्स इंजेक्ट कर सकें. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारे पास क्या कहते हैं, वो जो ब्लड प्रोडक्ट है, दैट इज नॉट मिस्टेकनली assumed as a non-self antigen by the patient's immune system and it launches an immune response. So we have to make sure that the artificial blood product does not trigger an immune response in the person's body who is receiving the artificial blood product. Second thing, as Aliza mentioned, हमारे पास उन artificial blood products को हमें screen करना होगा, ensure करना होगा कि उसमें कोई भी pathogen नहीं है, so that when we are transferring or transfusing these artificial blood products into the patient, we're not transfusing pathogen in the patient's blood. Then हमारे पास क्या कहती हैं, सबसे important चीज वो ये है कि हमारे पास जो ये blood products हैं, इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज्यादा. और शेल्फ लाइफ का क्या मतलब है कि इनकी जो एक्सपायरी है या इनकी जो विंडो है ऑफ देम बीइंग इफेक्टिव, दैट शुड बी लॉन्ग. बिकॉज लेट्स से मैंने आर्टिफिशियल ब्लड प्रोडक्ट्स बनाए और वो खाली 1 महीने तक चल सकता है, then obviously it is not serving a good purpose. They're not as useful compared to an artificial blood products which can be used or which can be saved for up to a year or maybe 2 years. So उनकी shelf life ज्यादा होनी चाहिए. फिर हमारे पास जो ये आर्टिफिशियल ब्लड प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, वो हम हर ब्लड टाइप के पेशेंट में ट्रांसफ्यूज कर सकें. किसी एक ब्लड टाइप के अकॉर्डिंगली वो ना हो, वो सब ब्लड टाइप्स के अकॉर्डिंगली हो. सो ये डिजायरेबल फीचर्स होने चाहिए. डज दैट मेक सेंस? So artificial blood products should not trigger an immune response in the person's body who receives them. They should not contain any pathogens. They should have a long shelf life. Okay. Carrots are root vegetables of the carrot plant. The carrot plant is an important food crop that is grown throughout the world. Carrots have a sweet taste because sugars form a proportion of the total carbohydrate present. Plant breeding has produced many different varieties of carrot with different levels of sweetness.
One of the sugars found in carrots is galactose. Galactose has the same molecular formula C6H12O6 as alpha glucose. Figure 3.1 shows the molecular structure of galactose found in carrots. This is similar but not identical to the molecular structure of alpha glucose. In figure 3.1, the 6 carbon atoms are numbered 1 to 6. State the differences between the molecular structure of galactose shown in figure 3.1 and the molecular structure of alpha glucose. So in alpha glucose, A for alpha, B for below, the OH of the first carbon is pointing downward. So हमारे पास alpha glucose में जो OH है वो इधर होता है और हाइड्रोजन above होता है. So that's one difference. Similarly, carbon number 4 पे जो हमारा OH होता है that points downwards and hydrogen points upwards. तो हमारे पास क्या कहते हैं carbon 1 और carbon 4 पे जो arrangement या placement of OH group है that is opposite in alpha glucose. The positions of OH and H are other way round in alpha glucose compared to galactose. An investigation was carried out to determine the sugar content of mature carrots produced by different local varieties of carrot plants that are grown in Tunisia, North Africa. Carrot plants were grown from seed under standardized conditions. So हमारे पास जितनी different varieties of carrot plants को grow करवाया था उनको same conditions में grow करवाया था. ऐसा नहीं था कि किसी को ज्यादा चीजें मिली थी किसी को कम चीजें मिली थी. All the environmental conditions necessary for growth of a plant were kept same for all the different varieties which were grown. When mature, the carrots were harvested. The different sugars present in the carrots were identified. Measurements of sugar content for each of the sugars were made. Table 3.1 shows the results for 5 different local varieties of carrot plant A to E. So 5 different varieties of carrot plants with different sugar content for each of the sugars was seen. So हमारे पास the sugars जिनके sugar content पांचों carrot types में देखे गए थे वो हमारे पास fructose थी, galactose थी, glucose थी and sucrose थी. After studying the results shown in table 3.1, a student concluded that the carrots from the local varieties contain the same 4 sugars. So all the 5 types of carrots have fructose, galactose, glucose and sucrose. The student made 3 other conclusions from the data in table 3.1. Conclusion 1 was that there are non-reducing and reducing sugars in the carrot, which is correct. ये हमारे पास क्या कहते हैं reducing sugars हैं and sucrose is a non-reducing sugar. So this is a correct statement. Conclusion 2, there are monosaccharide and disaccharide sugars in the carrots. So हमारे पास क्या कहते हैं over here fructose, galactose and glucose ये हमारे पास monosaccharides हैं. All 3 of them are monosaccharides, whereas sucrose is a disaccharide. So this is also a correct statement. The carrots have the same pattern of results. अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि क्या same patterns of results हमें दिखाई दे रहा है. So for all of them, you can see कि उनके पास जो highest proportion या highest sugar content in all of the 5 varieties fructose का ही है. For example, अगर हम A में देखें 183.04 मिलीग्राम पर ग्राम हमारे पास क्या कहती हैं fructose है और सबसे कम हमारे पास galactose है. So अगर हम इनको लिस्ट करें fructose is highest, फिर हमारे पास glucose है, then we have sucrose और सबसे कम कंटेंट हमारे पास galactose का है. So this is the highest proportion, this is the lowest proportion. तो descending order में हमारे पास क्या कहते हैं सारी sugars में हम यही देखेंगे कि हमारे पास even in variety B we have the highest proportion of fructose, then fructose के बाद हमारे पास glucose है second पे, third पे sucrose है और fourth पे galactose है. In variety C we are seeing the same trend. सबसे ज्यादा fructose है, then we have glucose, then sucrose and सबसे least हमारे पास galactose है. Then for variety D, the same thing is observed. Highest content is of fructose, then we have glucose, then sucrose, and then we have galactose. And the same thing is observed in
variety E as well, that the highest content is of fructose. Then we have glucose, then we have sucrose, and the least content is of galactose. तो हमारे पास ये वाला जो trend है, ये वाला जो pattern है, that is the same in all five varieties. Explain the evidence to table 3.1 that supports these three other conclusions. So हमने discuss किया conclusion 1 क्या थी? Conclusion 1 ये थी कि सारी sugars, सारी carrots में non-reducing and reducing sugars are present. So we'd say that evidence is that sucrose is a non-reducing sugar, whereas fructose, glucose, and galactose are reducing sugars which are present in all varieties. Conclusion 2, the conclusion 2 stated that there are monosaccharides and disaccharide sugars in the carrot. So we would state that fructose, galactose, glucose, they are monosaccharides, and sucrose, the disaccharide, and they are found in all varieties. So sucrose is a disaccharide, whereas fructose, glucose, and galactose are monosaccharides, which are all found in the five varieties. And the third conclusion was that the same pattern of results is observed in all five varieties. So we would say yes, all varieties have the highest content of fructose, lowest content of galactose. Name one carbohydrate. Carbohydrates that are not sugars are also present in carrots. Name one carbohydrate that is present in carrots and that is not a sugar. तो हमारे पास जो polysaccharides होते हैं, polysaccharides are basically not called sugars. So yes, they're made up of sugars, but they're not called sugars. So हमारे पास cellulose या starch में से हम किसी एक का नाम लिख देंगे and that would be a correct answer. So starch or cellulose. अच्छा starch में अगर आप amylose या amylopectin भी अलग से लिख देते तो वो भी आपके पास करेक्ट आंसर होता. So any of the four would have been a correct answer. So for conclusion 3, the carrots have the same pattern of results. They're not saying same results. सेम रिजल्ट्स तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जो शुगर कंटेंट है वो शुगर कंटेंट तो सबका डिफरेंट है. किसी का भी कंटेंट ऑफ फ्रक्टोज सेम नहीं है, गैलेक्टोज सेम नहीं है, ग्लूकोज सेम नहीं है, सुक्रोज सेम नहीं है. तो यू टॉकिंग अबाउट द पैटर्न. पैटर्न सबका सेम है कि सब में फ्रक्टोज इज द हाईएस्ट, फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट, and उसके बाद glucose, फिर sucrose, फिर galactose. So they're not saying the carrots have the same results. They're saying that the carrots have the same pattern of results. अच्छा ओके. करेक्ट. तो उसमें ऑब्वियसली आपको क्या कहते हैं, वो पैटर्न फाइंड आउट करना था. पैटर्न का मतलब होता है कि ट्रेंड क्या है. सो ट्रेंड हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं, उसकी बेसिस पे हम ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं. सो ओवर हमारे पास सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर ट्रेंड है, तो हमने वो सिमिलैरिटी ढूंढनी थी डेटा में. Yeah, that obviously would come with practice, definitely. Now, each carrot plant produces a carrot in the first year of growth. So we know कि हमारे पास हर carrot plant first year of growth में क्या कहते हैं, carrot जो vegetable है उसको produce करता है. If the carrot is not removed from the plant after it matures, the plant passes through a dormant period and shoots develop from the carrot in the second year of growth. तो अगर हम कैरेट को फौरन से जैसे ही वो मेच्योर हो रिमूव ना करें, कट हार्वेस्ट ना करें, तो वो जो कैरेट है, इट वुड अंडरगो, द प्लांट वुड अंडरगो अ डोर्मेंट पीरियड
एंड इवेंचुअली ड्यूरिंग दैट पीरियड हमारे पास कैरेट में से न्यू शूट्स यानी कि एक न्यू प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाएगा. This allows flowers to be produced and seed formation to occur before the plant dies. So if carrot is present and it hasn't been harvested, उस carrot से एक नया plant develop होना शुरू हो जाएगा, and once the new plant has developed, the old plant would eventually die. Explain with reference to the life cycle of the carrot plant when the carrot acts as a source and when the carrot acts as a sink. So before dormant period and हमारे पास क्या कहते हैं आफ्टर डोरमेंट पीरियड के रेफरेंस से आप लोग मुझे बताओ कि सोर्स कब होती है कैरेट और सिंक कब होती है कैरेट. इन विच बिफोर और आफ्टर पीरियड ऑफ द डोरमेंट would we see carrot acting as a source and in which period would we see it acting as a sink. So before the dormant period or in the first year of growth हमारे पास the carrot is acting as a sink, and in that it is basically taking up nutrients or assimilates for its growth and development, या वो स्टोर कर रही है assimilates अपने उसमें. ठीक है. एंड हमारे पास सोर्स कब होगी, सोर्स आफ्टर डोमेंट पीरियड होगी व्हेन उससे क्या कहती हैं आपके न्यू शूट प्रोड्यूस होगी. जब न्यू शूट प्रोड्यूस होगी एंड क्या कहते हैं हमारे पास इट वुड बी प्रोवाइडिंग फॉर फ्लावर्स एंड सीड फॉर्मेशन. That time duration is when it is acting as a source. So जो हमारे पास कैरेट के अंदर stored starch होगा, that would break down into disaccharides or simpler sugars, and those sugars would move from the carrot to the growing to the new growing parts of the immature plant. This is summer 2025 paper 2 variant 2, Aisha. So during, sorry, हमारे पास not during, after the dormant period, the carrot transports its stored starch, or you can say assimilates. You can transport sugars by breaking down the stored starch, would be a better explanation. By converting the stored starch to simpler sugars, or you can say sucrose. ये simpler sugars ही सही है. सिंक में वो कब थी, जब आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रोथ था. फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रोथ, द कैरेट. Okay. Carrot virus Y is a pathogen of carrot plants. The virus, which belongs to a group known as spotty virus, replicates its viral nucleic acid and proteins within host carrot cells. The general structure of spotty viruses is shown in figure 3.2. It's an RNA virus. The synthesis of viral proteins in host carrot cells only involves the process of translation. Translation में क्या होता है, RNA is converted into polypeptide chain. The process of transcription does not occur. Suggest why translation occurs in host carrot cells during the synthesis of viral proteins, but transcription does not occur. That is because हमारे पास आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा वायरस है, इट इज एन आरएनए वायरस. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमारे पास क्या कहते हैं, डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए. इस वायरस का डीएनए तो है ही नहीं, एंड क्योंकि इस वायरस का डीएनए नहीं है, सो द डीएनए डज नॉट हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू एन आरएनए फॉर प्रोटीन synthesis. Does that make sense? So the virus is RNA virus, and thus there is no need to convert a DNA to RNA.
the viral RNA can be directly translated to form viral proteins. Next question. Tuberculosis is an infectious disease that is caused by a bacterial pathogen. The pathogen has mechanisms to avoid digestion by phagocytes. Macrophages may engulf the bacteria, but in some cases, the bacteria remain alive within the cells instead of being killed. So, even when macrophages have ingested them via phagocytosis, still some of the bacteria can remain alive and not be digested. Although there are two main species of bacterium causing TB, it is rare for the species that causes bovine TB in cattle to infect humans. Name the species of bacterium that is the main cause of TB in humans. So, the main cause of TB is Mycobacterium tuberculosis in humans. Explain how the pathogen named in A is transmitted from a person with a disease to a person who is uninfected. So, infected person sneezes or coughs and the pathogen is transferred to the uninfected person as they inhale the droplet containing pathogen. State the type of therapeutic drug used to treat TB. So, antibiotics are used to treat any bacterial infection. Figure 4.1 is a photomicrograph of a section of lung tissue taken from a person who has not been infected with the bacterial pathogen and who does not have TB. नो हमारे पास क्या कहते हैं उन्होंने टाइप ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग पूछा नेम ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग नहीं पूछा टाइप अगर पूछेंगे तो आप एंटी मलेरियल एंटीबायोटिक एंटीवायरल्स लिखोगे अगर वो आपसे क्या कहते हैं नेम पूछेंगे तो नेम में आप फिर रिफैम्पिसिन पायराजिनामाइड इथम्ब्यूटॉल आइसोनियाजिड ये नाम यूज करोगे ठीक है So type में you state whether it's anti-malarial drug, antibiotic, antivirus, antiviral. अच्छा जी, blood vessels and some structures of the gas exchange system are visible in figure 4.1. On figure 4.1, use a label line and label a bronchus, a bronchiole, a blood vessel. Okay, so हमारे पास क्या कहते हैं bronchioles जो हैं they lead into alveolar duct. This is an alveolar duct. सही है ये सब आपकी alveolar duct है and they're obviously opening the air spaces are your alveoli. So ये जो structure है which is opening into an alveolar duct, this is basically your bronchiole. So through the presence of alveolar duct, we are able to identify the bronchiole. This is your bronchus because that is not opening into alveolar duct. और हमारे पास ब्लड वेसल क्या होंगी इन दोनों में से किसी एक को आप ब्लड वेसल आइडेंटिफाई करोगे सो दिस इज योर blood vessel. In some people with TB, areas known as granulomas may form in lung tissue as part of an immune response to the pathogen. ओके ये जितनी आपको एयर स्पेसेस नजर आ रही है ना ये सब आपके एल्व्यूलाई हैं तो आप किसी भी एयर स्पेस को अगर आइडेंटिफाई कर लो ये सब आपके एल्व्यूलाई हैं ठीक है Okay, so in some people with TB, areas known as granulomas may form in lung tissue as part of an immune response to the pathogen. Figure 4.2 is a photomicrograph of a granuloma in lung tissue. Okay, so we have multinucleated giant cells formed by the fusion of many macrophages. So ये हमारे पास क्या कहते हैं
फ्यूजन ऑफ मेनी माइक्रोफेजेस से मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी एक बड़े से सेल में बहुत सारे हमें क्या कहते हैं न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स कैसे फॉर्म हुए? जब मेनी मैक्रोफेजेस फ्यूज टुगेदर। फिर ये सब हमारे पास क्या कहते हैं, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज शोइंग अस डेड सेल्स एंड इन्फेक्टेड सेल्स, मेनली मैक्रोफेजेस। सो हमारे पास क्या कहते हैं डेड सेल्स एंड इन्फेक्टेड सेल्स, जो कि मेनली इनमें कौन से सेल्स हैं? जो हमारे डेड सेल्स भी हैं वो भी मैक्रोफेजेस हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स भी हैं वो भी मेनली मैक्रोफेजेस हैं। Collectively, multinucleated giant cells formed by the fusion of many macrophages and the dead and infected cells, which are mainly macrophages, they're collectively known as granuloma. फिर हमारे पास darkly stained white blood cells in outer area of the granuloma are also shown. With reference to figure 4.1 and figure 4.2, describe and explain how the changes that occur as a result of granuloma formation can affect gas exchange and harm the health of an infected person, may help to prevent TB developing in other parts of the body. अच्छा जी, तो हमारे पास हम फिगर 4.1 को देखते हैं। फिगर 4.1 में हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमारे पास क्या कहते हैं एयर स्पेसेस हैं। हमारे पास जो एयर स्पेसेस हैं, what happens is अगर इसमें ये बड़े बड़े granulomas बन जाएंगे, would that affect our gas exchange if a lot of granuloma form within our gas exchange system? ये masses form होंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास the formation of granuloma in our alveolar ducts or in our bronchioles would cause the lumen of our airways to decrease, जिसकी वजह से हमारे पास less air would enter the alveoli. Less air अगर enter करेगी alveoli में तो हमारे पास less oxygen would be diffused, और लेस ऑक्सीजन अगर डिफ्यूज हो रही होगी तो हमारे पास लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड वुड बी फॉर्म। तो हमारे पास ओवरऑल क्या कहते हैं, अगर लेस ऑक्सीजन इज रीचिंग द बॉडी टिश्यूज तो हमारे पास लेस रेस्पिरेशन होगी तो लेस एटीपी फॉर्म होगा। डज दैट मेक सेंस? एनी कंफ्यूजन अबाउट दैट? सो पार्ट 1 में हम लिख देंगे दैट granuloma formation would result in a decrease in the lumen of airways due to which less air would reach the alveoli, leading to decreased oxygen supply to the respiring tissues. Now, may help to prevent TB developing in other parts of the body. हमारे पास क्या कहते हैं ग्रैन्युलोमा में क्या चीज प्रेजेंट होती है? ग्रैन्युलोमा में हमारे पास मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है। हमारे पास क्या कहते हैं, अब होगा क्या कि हमारे पास जो ग्रैन्युलोमा है दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द लंग टिश्यू। हमारे पास the presence of macrophages within the granuloma would ensure that the pathogen does not leave the lungs and enter into another body tissue. तो हमारे पास क्या कहते हैं, the presence of so many macrophages, जो हमारे पास multinucleated cells हैं formed from the fusion of macrophages, they would basically try to eradicate the pathogen and stop the pathogen from reaching to other parts of the body. फिर हमारे पास ये कहते हैं क्योंकि जो ये इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ये इन्फेक्टेड सेल्स भी इसी ग्रैन्युलोमा में फंसे हुए हैं। ये इन्फेक्टेड सेल्स भी क्या कहते हैं, आपकी लंग्स को एग्जिट करके किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी में नहीं फॉर्म करेंगे। मैक्रोफेजेस क्योंकि कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पाती है जब किसी पैथोजन को, so वो क्या ट्रिगर करते हैं, वो आपके लिम्फोसाइट्स को ट्रिगर करते हैं फॉर अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। सो विद इन द लंग्स ये आपका अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाएगा, which would basically result in the formation of antibodies, and those antibodies would then further eradicate the bacterial pathogen. Okay. Any questions?
Let us know the distinctive 5 points of this 5 mark questions. Are these points clear? Aisha? Okay. Okay, question 5 हमने कल कर लिया था. Let's do question 6. Horseradish peroxidase, HRP, is an enzyme that can be extracted from the roots of the horseradish plant. So this is an enzyme which is found in the horseradish plant. और हम उससे इसे extract कर सकते हैं. HRP is used extensively in industry and technology. In the reaction catalyzed by HRP, hydrogen peroxide is used to oxidize an organic substrate. This is summarized by figure 6.1. एक organic substrate के साथ hydrogen peroxide react करता है in the presence of the hydrogen peroxidase enzyme to form oxidized substrate and water. Inhibitors can have an effect on Vmax, the maximum rate of reaction, and Km, the Michaelis-Menten constant of HRP. Figure 6.2 shows the effect of substrate concentration on the rate of reaction of HRP. Complete figure 6.2 by drawing a curve to show how the presence of a non-competitive inhibitor will affect the rate of reaction of HRP. Use the curve you have drawn to obtain an estimate of the Km. अच्छा जी, हमारे पास क्या कहती हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेल मी, जब हमारे पास एक नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर यूज होता है, क्या वीमैक्स अचीव होता है एट द सेम रेट या उससे कम आर्बिट्री यूनिट्स पे हमारे पास वीमैक्स अचीव होता है? इज द वीमैक्स लोअर्ड और इज इट द सेम? ओके, तो हमारे पास एज यू गाइस मेंशन हमारे पास एट अ लोअर आर्बिट्री यूनिट मैक्सिमम रेट जाता है, वीमैक्स तक हमारा नहीं जाता. सो लेट्स से हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं. ओके, द कर्व यू हैव ड्रॉन उससे आप क्या कहते हैं, प्रिडिक्ट करो अपना Km. सो हमारा, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा ये यूं ऐसे बनेगा बिकॉज हमारे पास ओवरलैपिंग होना चाहिए. ओवरलैपिंग क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास ये वाला ऑब्वियसली फास्टर रिएक्शन होगा, तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसका ग्रेडियंट स्टीप होगा, दूसरे वाले का ग्रेडियंट लेस स्टीप होगा. अब जो हमने कर्व बनाया है उसका हमें एक एस्टिमेटेड Km देना है. तो हमारे पास Km क्या होता है? द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट Vmax अपॉन 2. हमारे पास सबस्ट्रेट जब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो हमारे पास 4 AU इज द Vmax. सो 2 वुड बी आवर Vmax अपॉन 2. सो इस पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है. जब भी यूनिट्स मेंशन ना हो तो हमारे पास क्या कहते हैं, जब यूनिट्स मेंशन ना हो तो जरूरी होता है कि हम यूनिट्स भी मेंशन करें, क्योंकि यूनिट्स ना मेंशन करने के फिर हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे. Scientists can design synthetic DNA nucleotide sequences to produce a synthetic HRP gene. These sequences will include a start codon and a stop codon so that translation of messenger RNA can occur. Explain what is meant by a start codon and a stop codon. So, start codon is basically the codon which initiates the process of translation. तो हमारे पास क्या कहते हैं, द कोडॉन विच इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, एंड वी नो कि स्टार्ट कोडॉन हमेशा कोड करता है फॉर द अमीनो एसिड मेथियोनीन. तो हमारे पास द स्टार्ट कोडॉन is a triplet which initiates translation and codes for methionine. Yeah, you should know the name methionine. And stop codon is a triplet which basically stops the process of translation or terminates the process of translation. And हमारे पास जो stop codon होता है, it does not code for any amino acid. Stop codon stops or terminates translation. However, it does not code for an amino acid. HRP is used
In an immunological test known as a sandwich ELISA, one use of the test is to diagnose disease. Figure 6.3 outlines the main steps in a sandwich ELISA in which a toxin released by a pathogen is detected in a sample of a body fluid taken from a person who is ill. The test involves two types of monoclonal antibody that can bind to the toxin, a capture antibody and a detection antibody. So there is a capture antibody and there is a detection antibody. So कंप्लीट फिगर 6.4 अच्छा पहले 6.3 देख लेते हैं 6.3 में हमारे पास पूरे स्टेप्स इन्वॉल्व दिखाए हुए हैं स्टेप 1 prepare a test well by immobilizing the capture monoclonal antibody to the support surface so हमारे पास जिस surface पर हम अपना टेस्ट रन करेंगे उस surface से हमारे पास जो एंटीबॉडीज हैं वो अटैच रहनी चाहिए तो हम उन्हें उस surface पर immobilize कर देंगे Remove a sample of the body fluid from the person who is ill and add the sample to the test well. So हमारे पास हम एक पर्सन का सैंपल लेंगे और हमारे पास उस सैंपल को हम ऑब्वियसली अपनी टेस्ट सरफेस पर ऐड करेंगे जहां पर एंटीबॉडीज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टॉक्सिन रिलीज बाय पैथोजन प्रेजेंट होंगी Wash out the test well to remove any substances not bound to the capture antibody. So हम बाकी सारे substances को remove कर देंगे other than the antibodies and the substance, the toxin that is being produced. So toxin और antibodies के अलावा और कोई चीज बाकी नहीं रहनी चाहिए फिर जब हमारे पास हम ये कर लेंगे तो हम डिटेक्शन एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस करेंगे डिटेक्शन एंटीबॉडीज बेसिकली बाइंड करेंगी सिर्फ उस केस में अगर हमारे पास टॉक्सिन प्रेजेंट होगा सो एड डिटेक्शन एंटीबॉडी टू द टेस्ट तो ये हमारे पास डिटेक्शन एंटीबॉडी है उस पे HRP अटैच्ड है Wash out the test well to remove any detection antibody that is not bound to the toxin. So कोई भी antibody जिसने binding नहीं की उसको हम wash out कर देंगे. Add substrates for the catalysis by HRP and add acid after a set time to stop the reaction. तो हमारे पास क्या कहते हैं जो HRP है जिसको हम यूज कर रहे हैं इन एन इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हम उस HRP को ऐड कर रहे होते हैं विद द डिटेक्शन एंटीबॉडी तो HRP का जो सबस्ट्रेट है हम उस सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे और हमारे पास HRP क्या प्रोड्यूस कर रहा था HRP वाज बेसिकली प्रोड्यूसिंग द ऑक्सीडाइज्ड सबस्ट्रेट तो हमारे पास हम चेक करेंगे कि हमारे पास HRP जो है वो कैटलाइजेशन कर रहा है या नहीं कर रहा एनी क्वेश्चंस अबाउट द स्टेप्स Complete figure 6.4 to show the situation in the test well after step 5. अच्छा हमारे पास क्या कहते हैं wash out the test well to remove any detection antibody that is not bound to the toxin हमें step 5 के बाद की basically figure complete करनी है now हमारे पास क्या कहते हैं इनसे हमारी एंटीबॉडीज जो हैं वो आकर बाइंड होगी क्योंकि हमारे पास टॉक्सिन जो है वो प्रेजेंट है सो हमारे पास एक एंटीबॉडी So that's how we're showing the antibodies being attached to toxins. With reference to figure 6.3, describe one difference between the capture antibody and the detection antibody. So हमारे पास जो capture antibody होगी, that basically, let's look at it. क्या हमें difference नजर आ रहा है between the capture antibody and the detection antibody? This is the capture antibody and this is the detection antibody. बाइंड कैप्चर एंटीबॉडी भी टॉक्सिन से कर रही है और बाइंड डिटेक्शन एंटीबॉडी भी टॉक्सिन से कर रही है नाउ इफ यू सी टॉक्सिन की जो लोअर सरफेस है टॉक्सिन की इस वाली सरफेस है जो लोअर सरफेस है उससे आपकी कैप्चर एंटीबॉडी बाइंड कर रही है और हमारे पास जो ऊपर वाली सरफेस है जो पॉइंटेड ट्रायंगुलर सरफेस है उससे आपकी डिटेक्शन एंटीबॉडी कर रही है सो हमारे पास द कैप्चर एंटीबॉडी एंड द डिटेक्शन एंटीबॉडी आर बाइंडेड टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द टॉक्सिन And also, as Abdullah mentioned, हमारे पास जो detection antibody है, it consists HRP, whereas the capture antibody does not consist HRP. So इनमें से कोई एक हम basically अपना difference लिख देंगे. Capture antibody and detection antibody bind to different locations or different sides of the toxin. Figure 6.5 outlines the reaction
catalyzed by HRP in step 6. The organic substrate, TMB, is in excess and changes color when it is oxidized. This indicates a positive test result. A student suggested that a low concentration of toxin may be diagnosed as a negative result instead of a positive result. The student said कि हमारे पास it is possible कि अगर हमारे पास toxin present है लेकिन क्योंकि वो लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है तो उसका जो रिएक्शन होगा वो भी कम होगा तो हो सकता है हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग हमें कलर चेंज नजर ना आए. Is that a valid conclusion or a suggestion that the student has made? ये एरर आ सकता है कि हमारे पास अगर लो कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होगा तो कम रिएक्शन होगा तो कम कलर चेंज होगा एंड हो सकता है इतना कम कलर चेंज हो कि हम प्रॉपरली डिटेक्ट ही ना कर पाए उस कलर चेंज को. सो so the student suggested to use a colorimeter after step 6 in the sandwich ELISA test, that it would provide a quantitative result and help to avoid this error. With reference to figure 6.5, explain why using a colorimeter would provide a quantitative measurement for detection of a low concentration of the toxin and help to confirm a positive result. हमारे पास colorimeter को मैंने previously भी explain किया था. I think so मेरे पास colorimeter की image present भी होगी. This is a colorimeter. वैसे तो आई एम अज्यूमिंग आप लोग फेमिलियर होगी कैलोरीमीटर से बट मैं फिर से जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ हाउ कैलोरीमीटर वर्क्स. हमारे पास ये बेसिकली फोटो कैलोरीमीटर होता है. हमारे पास मैं थोड़ा सा जूम इन कर रही हूँ एंड लुक एट माय एरो. कैन यू सी कि यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट है, ग्लास टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट है. जस्ट अ सेकंड, एक मिनट. दिस इज अ टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट. अच्छा हम करते हैं क्या है, हमारे पास जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा होता है एंड हमारे पास कलरीमीटर उन्हीं रिएक्शंस के लिए हम यूज करते हैं जिनमें कलर चेंज होता है बिकॉज हमारे पास कलरीमीटर इसेंशियली छोटे से छोटा चेंज इन कलर को डिटेक्ट करता है. सो हमारे पास जो ये टेस्ट ट्यूब हमने कलरीमीटर में प्लेस किया उसमें ये चेंज ऑफ कलर हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बीइंग प्रोसीडेड. हमारे पास क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब के साथ साथ हम एक और चीज प्लेस करते हैं अपने कलरीमीटर में. यहाँ पर आपको नीचे नजर आ रहे होंगे ये कलर फिल्टर्स. हमारे पास जो हमारी नॉर्मल व्हाइट लाइट है, यू आर अवेयर कि व्हाइट लाइट में हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है, मल्टीपल डिफरेंट कलर्स होते हैं, विबग्योर होते हैं. हम बेसिकली कलरीमीटर में एक लाइट की वेवलेंथ इंश्योर करते हैं कि वो पास कर रही हो. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने कलरीमीटर में ब्लू लाइट चूज की, मैंने ब्लू फिल्टर यूज किया. सो व्हाट हैपेंस इज कलरीमीटर में हमने जो स्पेस है उसमें हमने प्लेस किया क्या कहते हैं अपने टेस्ट ट्यूब को जिसमें रिएक्शन हो रहा था. सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि बिफोर, अच्छा नहीं मैं उसको बाद में आती हूँ. होता क्या है कि हमारे पास जो कलर लिक्विड है उससे जब लाइट पास होती है, टेल मी कि एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड से सारी लाइट पास हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, या एक स्ट्रांगली कलर्ड लिक्विड से सारी लाइट रेस पास होंगी. इसको मैं हमेशा इस एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपके पास एक क्लियर शीशा है, जो आपका कार विंडो है वो क्लियर है, उस पर कोई टिंटेड कलर या टिंटेड क्या कहते हैं शेड नहीं लगा हुआ, और एक आपके पास टिंटेड विंडो है. किस क्या कहते हैं सरफेस से ज्यादा लाइट पास होती है, ट्रांसपेरेंट सरफेस से ज्यादा लाइट पास होती है ना. सो हमारे पास क्या कहते हैं कलरीमीटर क्या करता है, वो एब्जॉर्बेंस को मेजर करता है. हमारे पास बेसिकली अगर एक बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है तो एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट 0 होगी, ट्रांसमिटेंस 100% होगी. और अगर हमारे पास कोई कलर मौजूद है यानी कि कोई सोल्यूट की वजह से कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारे पास जैसे जैसे सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब कलर्ड होती जाएगी हमारी एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय द सोल्यूशन वुड इंक्रीज एंड द ट्रांसमिटेंस ऑफ लाइट अक्रॉस द टेस्ट ट्यूब वुड डिक्रीज. डू वी ऑल अग्री विद दिस? ओके मैं फिर से रिपीट करती हूँ. एक सेकेंड, कोई और क्वेश्चन है मैं देख लूं. हमारे पास अगर लेट्स से आपके पास एक ग्लास है उसमें आप पानी रखो और एक ग्लास है उसमें आप कोक रखो, और आप एक टॉर्च को उन दोनों ग्लास अंधेरा कर दो और आप क्या कहते हैं एक टॉर्च को प्लेस करो इन फ्रंट ऑफ द ग्लास विच कंटेन्स वाटर एंड इन फ्रंट ऑफ द ग्लास विच कंटेन्स कोका कोला. अब आप मुझे ये बताओ
कि आपने लेट से ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, लेट मी ड्रॉ द टेस्ट ट्यूब. दिस इज अ टेस्ट ट्यूब which is transparent, and let's say this is the test tube which is colored. इसमें हम कलर रख देते हैं. नाउ मेरे पास क्या कहते हैं, जितनी लाइट है वो सारी की सारी पास हो जाएगी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन के अक्रॉस. वी अग्री विद दिस. और अगर लाइट मूव करे कलर्ड सॉल्यूशन से, तो सम अमाउंट ऑफ लाइट वुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉल्यूशन एंड थोड़ी कम अमाउंट ऑफ लाइट वुड बी ट्रांसमिटेड. इज दैट करेक्ट? सो हमारे पास क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम कलरीमीटर को पहले कैलिब्रेट करते हैं. कैलिब्रेट का मतलब यह है कि बिफोर स्टार्टिंग आवर एक्सपेरिमेंट हमारी जो कलरीमीटर पे रीडिंग होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए. इट इज नोन एज द जीरोइंग ऑफ द कलरीमीटर और कैलिब्रेशन ऑफ द कलरीमीटर. ताकि कलरीमीटर को पता हो, एक उसके पास स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट हो कि हमारे पास 0 एब्जॉर्बेंस और 100% ट्रांसमिटेंस क्या है. क्योंकि फिर वो चेंजेस को उस रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करेगा कि ओके, जब ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन थी तो 0 लाइट वाज बीइंग एब्जॉर्ब एंड ऑल द लाइट वाज बीइंग ट्रांसमिटेड. पर जैसे जैसे कलर चेंज आएगा या कोई मैं कलर्ड सॉल्यूशन रखूंगी ब्लैंक या ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन की बजाय, तो मेरे पास जो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू होगी वो चेंज होगी. वो लेट से हमारे पास 3 हो जाएगी, 3 की रीडिंग दे देगा हमारा कलरीमीटर. डज दैट नाउ मेक सेंस? इट मेजर्स एब्जॉर्बेंस बाय द सॉल्यूशन. एग्जैक्टली. अच्छा, हमारे पास कुछ कलर मीटर ना एब्जॉर्बेंस भी मेजर करता है और ट्रांसमिटेंस भी मेजर करता है, लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड या कन्वेंशन हम यूज करते हैं वो यही होता है कि हम कलरी मीटर से एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय द सॉल्यूशन फाइंड आउट करवाते हैं. तो अपनी कलरी मीटर की सेटिंग ही ऐसे ही करते हैं कि वो हमें एब्जॉर्बेंस की वैल्यूज दे, ना कि ट्रांसमिटेंस की. वो दोनों दे सकता है, लेकिन जैसे हमारे पास कैलकुलेटर उसको हम डिग्री या रेडियन पे सेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास क्या कहते हैं, हम कलरी मीटर को सेट कर सकते हैं ट्रांसमिटेंस की वैल्यूज देने पे या एब्जॉर्बेंस की वैल्यूज देने पे. कन्वेंशनली हम एब्जॉर्बेंस की वैल्यूज ही फाइंड कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर कलरीमीटर्स आपको एब्जॉर्बेंस की वैल्यूज दे रहे होते हैं. डज दैट मेक सेंस? ओके. सो हमारे पास क्या कहते हैं, कलरीमीटर हमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट देता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है. तो हमारे पास जब भी कोई चीज हमें एक क्वांटिटेटिव रिजल्ट देती है उसकी आंसर ज्यादा रिलायबल होता है. सो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विद रेफरेंस टू फिगर 6.5 एक्सप्लेन व्हाई यूजिंग a colorimeter would provide a quantitative measurement for detection of a low concentration of the toxin and help to confirm a positive result. तो हमारे पास colorimeter basically measures the absorption of light by a solution. Even if there is a slight or a low change in the color, that degree or that measure of absorbance would be recorded by the कलरीमीटर. तो हमारे पास क्या कहते हैं, इफ द एब्जॉर्बेंस वैल्यूज आर लोअर, तो हम उस लोअर एब्जॉर्बेंस वैल्यू से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिन है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमारे पास टॉक्सिन प्रेजेंट ही नहीं है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट है. डज दैट मेक सेंस? सो वी से कलरीमीटर gives values of the absorption. बस हमारा जैसे ही मैं आंसर लिख दूंगी हमारी क्लास एंड हो गई. दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. लेट मी रीड योर क्वेश्चंस एंड देन वील कॉल ऑफ द क्लास. We shall know the significance of colorimeter and its uses. You should know the uses of colorimeter. यूज ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें कलर चेंज होता है, और हमारे पास वो भी क्या कहते हैं, एक्वस रिएक्शन. हमारे पास सॉलिड कलर चेंजेस के लिए हम कलरीमीटर को यूज नहीं करते. एक्वस सॉल्यूशन अगर हमारे पास कलर चेंज आ रहा है उसके लिए हम क्या कहते हैं, कलरीमीटर को यूज करते हैं. प्रैक्टिकल्स में आपके पास कलरीमीटर पे क्वेश्चन आ सकता है. इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो चेंज इन एब्जॉर्बेंस आता है, हम उस चेंज इन एब्जॉर्बेंस, क्योंकि एब्जॉर्बेंस हमारे पास कब चेंज हो रही होगी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा होगा. तो हमारे पास हम चेंज इन एब्जॉर्बेंस को क्या कहते हैं, टाइम करते हैं कि कितनी टाइम लगी एक रिएक्शन को कंप्लीटली एक फिक्स्ड एब्जॉर्बेंस की वैल्यू रीच करने में, और उस चेंज इन एब्जॉर्बेंस को हम डिवाइड कर देते हैं टाइम से.
सो हम कलर मीटर के थ्रू ना सिर्फ किस तरह से हमारे पास कलर चेंजेस आ रहे हैं उनकी रीडिंग्स दे सकते हैं, बल्कि हम रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन आयशा? The MS the MS accepted range for KM value question was 0.55 to 0.6. Oh, अच्छा, let me see. 0.55 to 0.6. So I think so मुझे और भी थोड़ा सा क्या कहती हैं लेस स्टीप ग्राफ बनाना चाहिए था. Something like this. तो अब हमारे पास क्या कहते हैं उस रेंज में आ जाएगा. थैंक यू सो मच अब्दुल्ला फॉर करेक्टिंग.